आदित्य ऑनलाइन है. Okay. So Hare Krishna, everyone. Aditya, सुन पा रहे हो right? You can unmute and speak, so it will be easy. Okay. हाँ प्रभु, आवाज आ रहा है. Okay. I'll just start with prayers. A small prayer. Okay. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, so Aditya, you can also pin my presentation to your screen, so it will be easy for you. ठीक है. So today's session हम लोग discuss करेंगे Vedic solutions for the problem of lives. Okay, ठीक है. आप लोग कुछ notes बना सकते तो अच्छा है. It will be better because this session has lot of concepts, very important session, and lot of knowledge points. So if you can make some like 5 to 10 points, it will be very helpful for you in future. ठीक है. So वेदास हमें सिखाता है कि how to go from darkness to light, from ignorance to goodness, है ना. And the whole world is now looking towards Vedas. जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि when Prime Minister Modi he became the Prime Minister of India, he just went and just touched it that we should have World Yoga Day, and everybody instantly accepted it. People are now practicing pranayama, yoga. So many yoga classes are there all over the world. They have started, and people even are using the cow dung. Research हो रहा है उसके ऊपर that it has some cancer curing medicines in cow dung. So ये सब all these things are there because of Vedas. Okay, so today's session we'll be discussing these 5 main top points. Okay. Okay, animals versus humans. Don't waste this opportunity, special opportunity. Temporary solutions, special technology and medicine, science, technology and medicine. Permanent solution, Vedic wisdom, science versus Vedas, history versus Vedas, and where can I get authorized Vedic knowledge? So today's session will be added into these 5 topics. So it is a little vast, but I'll try to cramp it in 1.5 to 2 hours. Okay. So coming to our next slide. Yeah. So yeah. So one thing that everyone is looking for. What is that one thing most of us are looking for? आप लोग guess कर सकते हैं. Happiness. Peace, happiness. Peace is there, but above peace there is happiness that we are looking for, right? So when we look over for happiness, search for happiness. So some people find happiness in sports. Football follow करते हैं, cricket follow करते हैं, different sports they themselves play sports. And some people find happiness in drugs, smoking, all what you say, different activities, such wrong activities. Yes, some people find happiness in some disco, some concerts. Yes, when I was not into Krishna consciousness, when I was in Chennai, in my maybe 12th class or like that. So one very much famous singer was there. He composed the songs of one movie named Kamine long back. Vishal, I think his name, I forgot. So he came there and we all were like, okay, we have to go there. We all booked. So this was happiness for us that time. We didn't know the definition of happiness. But this was happiness for us that time. Okay, adventure. Some people like adventure. Look at these boys, what they're doing. Something very difficult that others don't want to do. कुछ thrill होना चाहिए.
Like my uncle, he's working in Deloitte. Okay, his branch is in Germany. So he did this bungee jumping and scuba diving, all those things, and sending the videos on Instagram and all those things. So people feel that happiness is there in these activities. Yes, thrill चाहिए life में. People want some fashion, अलग अलग हेयर स्टाइल्स करेंगे, फुटबॉल का हेयर स्टाइल, all those things, right? People think happiness is in that. Okay, so um, there are what you say, happiness means improved facilities for eating, sleeping, mating, defending. This is what people are actually searching, right? अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छे से नींद होना चाहिए रात में, मेटिंग होना चाहिए और डिफेंसिव होना चाहिए, खुद का सुरक्षा होना चाहिए, right? This is what people think happiness is. Want to, जैसे कि हम अब जो हम लोग कुछ जाते हैं खाने के लिए कहीं पर, we look at the good dishes, क्या अच्छा मिलेगा खाने के लिए, right? दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, कुछ स्पेशल आइटम चाहिए. दिस थिंग पीपल लुक. अभी फिर सोना है, तो सोने के लिए भी सुबह उठने का मन नहीं करता, राइट? थोड़ा और आधा घंटा ज्यादा सो लेते, अलार्म फिर सेट कर देते. स्लीपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, देन वी वांट सम पार्टनर आल्सो, मीटिंग, एंड देन डिफेंस. वी वांट टू डिफेंड आवरसेल्फ, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. अभी जब हम बचपन में थे, वी वर गेटिंग अट्रैक्टेड टू टॉयज, बलून्स, बट now that balloon has become girlfriend, boyfriend. Girlfriend is a balloon for a boy. He is getting attracted to that. Yes or no? So defense, like judo, karate सीखते हैं, but parents बचपन में बच्चों को डाल देते हैं कुछ सीखने के लिए, all those things, right? तो अभी animals के भी दोस्त रहते हैं. Animals also have fun. They also have family, है ना? They are also doing all these things. They also have friends. You can see how they also have all these things. So animals also find happiness in the same thing: eating, mating, sleeping, and defending. Yes, Aditya. सब clear है, right? Yes, Prabhu. Clear. Okay. Yeah. So you are watching the presentation. No? Hello. This session will be mostly on presentation and videos. Okay. हाँ प्रभु देख रहे हैं वो. Okay. Yeah. So हेलो. हाँ जी प्रभु देख रहे हैं. तो अगर यही चीज है, तो इंसान भी अगर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? व्हाट विल बी द डिफरेंस? सम पीपल से दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कंट्रोल एनिमल्स, है ना? कि हाथी को सर्कस में स्टूल के ऊपर बिठा के कुछ बलून्स या कुछ करते हैं, टाइगर को एक रिंग से जंप करने को बोलते हैं. तो ह्यूमन बीइंग, सम पीपल से ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल. सो ठीक है, दिस इज देयर, बट एनिमल्स डल नहीं है. दे आल्सो हैव सम इंटेलिजेंस. सम पीपल से एनिमल्स आर डल, ह्यूमंस हैव मोर इंटेलिजेंस देन एनिमल्स. आई विल जस्ट शो यू वन वीडियो ना. आप उसमें देख सकते हैं कि एनिमल्स आर नॉट डल. ओके, I'll stop sharing this tab and I'll play this video. So sound मेरे कंप्यूटर में आएगा because this video is not I'm not able to play this video on Chrome. So sound will be in my computer, Aditya, but you can visualize the video. You'll understand by the looking at it what is happening there. Okay. Okay प्रभु. Okay. स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो? The banks of the River Nile. These waters and banks are very dangerous. Many dangers have to be faced in order to raise young here. The species of bird you are watching has to build its nest on banks that are full of crocodiles. It moves very slowly and tries to avoid attracting the crocodile's attention. It particularly
chooses areas where female crocodiles have left their eggs to build its nest. That is because female crocodiles are very calm and docile during egg-laying time and do not represent a danger to the birds. In time, the bird's eggs begin to hatch and tiny chicks emerge. Yet these chicks are in danger. As you can see, both the mother and father bird fiercely use their own bodies to shield their young and defy the dangerous lizard. The lizard might kill the bird, but the bird is ready to die in order to save its chicks. The lizard gives up in the face of the bird's determination and courage. Things change when a hungry and aggressive male crocodile approaches the nest. The chicks freeze. The mother bird puts on a different display this time. She opens her wings and beats them on the ground. She does not directly oppose the aggressor. On the contrary, she imitates an injured bird and invites the aggressor to attack her. She thus attracts the danger away from the nest. The deception works. The crocodile follows the supposedly injured bird and moves. क्या ओके सो क्या समझ में आया इस वीडियो से? आप में से कोई भी एक जन बोल सकते हैं. एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस होता है जो कि वो अपने बच्चे को सेव कर रहा है. मतलब उसके पास कुछ तो इंटेलिजेंस होगा जो मेरा बच्चा है उसको सेव करना है और इससे डेंजर है. करेक्ट. तो देखिए दे हैव रैशनल इंटेलिजेंस. पहले व्हेन द लिजर्ड केम दे आर ओपनिंग द फेदर्स एंड दे आर ट्राइंग टू सेव देयर चिक्स. एंड देन व्हेन द क्रोकोडाइल केम उन्होंने क्या किया? एक्टिंग एज इफ अनेबल टू फ्लाई, एज इफ इंजर्ड, और वहां से लंगड़ के जाके ऐसे ही नाटक करके उसको क्रोकोडाइल का डाइवर्ट कर दिया अटेंशन अपने चिक्स के वहां से. दे हैव रैशनल इंटेलिजेंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स, राइट? So I'll show one more video now. You can see this one also. So animals do have intelligence, right? Some people say animals are dull, but it's not true. They also have intelligence. VLC media player. स्क्रीन विजिबल है VLC. A group of lions ambush an elderly buffalo that has moved away from the herd. It looks like death will be the inevitable result. But a miraculous event takes place. The elderly buffalo's cries for help reach the distant herd. They at once head for the scene. Then courageous buffaloes approach the lions in a threatening manner in order to rescue their companion. And the lions flee. The buffalo gather round the injured animal and try to raise it to its feet. Minutes pass. Things look hopeless for the exhausted buffalo. The lions are still waiting in ambush.
Believing it to have died, the last few remaining buffalo begin to move away. And yet, another miraculous event takes place. The injured buffalo cries out one more time, as if asking them not to leave it. The herd immediately come back. The buffaloes once more see off the approaching lions. With a final effort, the elderly buffalo rises to its feet, and mingling with its rescuers, is lost from sight. Okay. So Aditya, आप बोल सकते हैं what did you understand by this? हाँ प्रभु की तो मतलब वो मतलब एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि वो अपना ग्रुप का मेंबर को बचाने के लिए सब लोग साथ आके कैसे करके बचाया। उसके बाद और भी जो है आप और भी मतलब कि सिर्फ ह्यूमंस में इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पे एनिमल भी अपना मतलब टीममेट के प्रति इंटेलिजेंस लव ये सब शो करता है। ओके, यस, एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस है ना। सो अभी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एक एनिमल्स में भी है और ह्यूमंस में भी है, राइट। तो अभी जब ये दोनों में है तो आई विल जस्ट show you one give you one task over here. Yeah, तो देखिए कि what is the speciality of each animal you have to say. Okay, तो नीतीश, ईगल का स्पेशलिटी क्या है? क्विकली, सिंपल है, eyesight यस, eyesight करेक्ट, वेरी स्ट्रांग eyesight. हॉर्स और इज रनिंग, क्विकली बोलते जाओ, ठीक है। डॉग स्मेलिंग सेंस, स्मेलिंग एंड देन थीफ को पकड़ता है सोते हुए भी रात में। ओके, एलिफेंट और स्ट्रेंथ, अप्रूव ट्री को अप्रूव कर सकता है, राइट। इस बियर 6 महीने सो सकता है, एग्रेशन है। हाँ वो 6 महीने रहता है, 6 महीने सोता है ना। दिस कुकू, ब्यूटीफुल वॉइस के लिए, वॉइस and also these birds, right? If you say, take for example pigeon and all these birds, they all can do many things that human beings cannot do. तो अगर हम देखा जाएगा तो एनिमल्स को तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में। लोग हमसे अच्छा कर पा रहे, हमसे अच्छा सो पा रहे, हम लोग तो 6 महीना नहीं सो सकते, हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके पास है। Pigeons can have, birds can, like especially pigeon का जो species, they can have sexual intercourse I think 12 times in 1 hour. We can't do that, not possible for human beings. Eating, sleeping, mating, defense, वो लोग के पास अपना defensive strength हम लोग से ज़्यादा होता है, right? So they are superior in all those activities. Okay, then but if you carefully observe the same thing, animals have rational power and intelligence. Animals are better than human beings, जैसे मैंने बोला. Okay, like if animals have so many special skills, then who is superior, human being or animal? अगर रेस लगा जाएंगे यूसेन बोल्ट में और चीता में, तो चीता ही जीतेगा, राइट, है ना। What makes human being so special in comparison to animal? आप लोग थोड़ा कुछ इंटरेक्शन, क्या अलग बनाता है? हाँ, अभी हम लोग we are just comparing humans and animals, okay, on these 4 activities, because these are the 4 common activities. एनिमल्स अपना इंटेलिजेंस बस सर्वाइवल के लिए लगाते हैं, मतलब जितना लगता है उनको और कोई नीड भी नहीं होता है, सर्वाइवल के लिए वो अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं। और ह्यूमन भी सर्वाइवल के लिए लगाते हैं, लेकिन हमेशा प्रोग्रेसिव थिंकिंग, मतलब कुछ और इससे और आगे करना चाहता है उसके लिए। एनिमल्स में भी ऐसा कुछ है प्रोग्रेसिव का, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप लोग शॉक हो जाएंगे। ह्यूमंस जो है ये 4 चीज के अलावा भी सोच सकता है, मतलब वो इसके अलावा भी डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारा चीज के लिए क्या है बस। ओके, बेसिक सिमिलरिटीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये आया है भागवत गीता से। भागवत गीता, महाभारत, यहाँ से श्लोक आया है। तो शास्त्रों में ही दिया गया कि these are the only 4 activities that are common in animals and human beings. Okay, so now देखिए
Western countries, they have reached the summit of material advancement, development है, very beautiful luxurious house they have, Americans, Europeans, Australia, skyscraper buildings है, फिर अच्छा डिफेंस सिस्टम है, जेट प्लेन्स है, टेक्नोलॉजी है, so everything they have, right? So is human being only a two-legged animal, sophisticated animal with a deluxe edition, or is it superior in other ways? Because हम लोग same चीज कर रहे हैं, right? A dog sleeps on a road, we sleep on a Dunlop pillow, bed पे सोते हैं. मैं कहीं पर सुना था कि ऐसा भी एक बेड है जिसके अंदर पानी भरना है, ठीक है? तो if it is winter, you can fill some warm water in that, you will get a warm sleep throughout the night. Summer में cool water भर सकते हैं, और अलार्म लगा तो बेड पूरा हिल के आपको उठा देगा. They are mating on the road, we mate in a private room. They have food on the road, we have food in some restaurant or hotel, cooked food है कि नहीं? And they have their defense system, we have our defense system बनाया गया है, right? So actually अगर देखा जाए तो हमारा जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग सब उसी के लिए लगा रहे हैं, राइट? है ना? यस और नो? जैसे कि फिलिप्स कंपनी का पहले ऐड आता था कि लेट्स मेक थिंग बेटर, wherever we stay, let's make thing better and we'll be happier. तो अगर ऐसा हैप्पी लाइफ है तो देन अमेरिका में अगर देखा जाएगा, द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सो आप in every 3 marriage, 1 marriage is getting into divorce. There is maximum suicide rate in that country. They are having weapons, everything. The children are even committing suicide due to pressure. Sleeping pills लेते हैं, उनको नींद नहीं आती है रात में, एडवांसमेंट होने के बाद भी. यहाँ पर तो भिखारी भी सो जाता है फुटपाथ पे, चैन की नींद लेके सो जाता है ना? तो लोग क्यों हैप्पी नहीं है? एडवांसमेंट तो सब कुछ हो रहा है ना ये 4 चीजों में, हाँ? In spite of all the advancement, unfortunately, modern day humans are full of anxiety, stress, depressed, and above all, unhappy. आप ही रीड करेंगे नीतीश? टेक्नोलॉजिकल advancement helps man enjoy better luxurious or better eating, sleeping, mating, defending, without offering any ultimate aim of life. This is sophisticated animal civilization. करेक्ट. हम लोग वही चीज कर रहे हैं जैसे मैंने बोला. तो अभी डिफरेंस क्या है ह्यूमन बीइंग और एनिमल में? आप लोगों में से कोई बोल नहीं पाया अभी तक. सो ये महाभारत का श्लोक है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम् सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विषयो धर्मो हि तेषाम् अधिको विषयो धर्मानहीन पशुभिः समाना. धर्मानहीन पशुभिः समाना. सो आप रीड कर सकते हैं ट्रांसलेशन इसका. The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about God and perform the dharma of obeying His laws, loving and serving Him. Otherwise, they are considered just like animals. आंसर मिल गया. तो आप अगर देखेंगे चारों ओर आंख, मतलब अपना आंखें फैला के, तो सब यही चल रहा है ना वहाँ पर. यही 4 चीजों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं. ट्रेन पकड़ के आते हैं कृष्णनगर से सियाला, वहां से फिर बस पकड़ के कहीं सॉल्ट लेक में जाते हैं, कंपनी में काम करेंगे, फिर रात में रिटर्न जाएंगे. इसके लिए ताकि ये चीज अच्छे से कर सके. फिर जानवर जैसे हो गए, राइट? सो अनलेस वी फॉलो धर्मा, अनलेस वी इंक्वायर अबाउट गॉड, ओके, गॉड का जो लॉज है उसको फॉलो करेंगे, देन वी आर जस्ट कंसिडर्ड एनिमल्स ओनली. आप लोग मानते इस बात को? हाँ, एनिमल्स की तरह ही कह रहे, सोफिस्टिकेटेड वे में बस. तो अब जो श्लोक में बोला गया है, क्या आप इसको मानते हैं? Unless we follow the laws of God, unless follow dharma, we are just like animals, right? Yes or no? Aditya? Yes. Animals can enjoy. Yes, brother.
Correct. Animals can inquire only about these four things, right? Eating, mating, sleeping, defending. But it is not the case in us. We can inquire something much better, right? Because we have higher intelligence. So what is the cause of suffering? To inquire what is the purpose of life, to harmonize our life with God and nature, to attain eternal happiness. These things only we can inquire. अगर मैं किसी कुत्ते को लाके बिठा दूंगा यहाँ पर और मैं बोलते जाऊंगा तो उसको समझेगा कुछ नहीं. We can understand that knowledge. They can understand, right? So this is the main difference between humans and animals. Um, okay. Then let's go. Even the there are some examples of some like Shakespeare. He said that life is just like a drama. That we have come here, we have different roles, friends, parents, family, everything, and after some point of time, all of us have to leave our character, and then we'll get into a new body with a new character. There we will play some other role. So Shakespeare has recognized this thing. Muhammad Ali, you know, right? He used to say, "I'm the greatest," the boxer Muhammad Ali. So he said that he has several years. उसने अपने life का goal boxing रखा है. But at the last, there is no use of it. I will show you some of his quotes which I have told over here. So basically अगर देखा जाए कि animals life में goal नहीं होता है. There is not a precise goal. Okay, चिड़िया सुबह उठती है, चू 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 करेगी. Okay, where is my food? That's it. It finds its food. खाना मिलने के बाद they sleep nicely or they have mating and then they fight and they defend ourselves. Again सो जाएंगे रात में, सुबह फिर से उठ के same चीज चलता रहेगा, right? But we have goals in our right? Goals है हमारे life में. आप लोग engineering कर रहे हैं, तो after engineering you would like to have some good placement in good company, good promotion. You will search for some going abroad. Abroad जाने का कुछ आप देखेंगे. Abroad जाने का chance है तो बहुत अच्छा है. Getting a good house, a car, right? Everyone thinks the same thing. A goal है कि this I have to do this thing, get settled in life nicely, get married, have children, all those things. So this is the goal that we have. But animals, they don't have all this thing. Okay, so this is the very important thing. And even अगर देखा जाएगा कि we have so many doctors, right? Doctors of I gave you the example of those three brothers. Remember? From balcony जो देख रहे थे. So we have doctors for different parts of our body. आंखों का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, ब्रेन का डॉक्टर है, स्किन का डर्मेटोलॉजिस्ट है. क्यों ऐसे है? और क्यों अलग-अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर? हाँ, अभी तो हर एक पार्ट ऑफ बॉडी के डॉक्टर बन गया. लिवर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट. ऐसे क्यों? क्यों ऐसे है? क्योंकि उतना नॉलेज नहीं रहता है. तो सोचो अच्छे से. अभी तक जो मैं बोला उसमें से आप गेस कर पाएंगे थोड़ा. Yes, why? वो अपना हैप्पीनेस उसी में फाइंड करते होंगे स्पेसिफिक मोमेंट. Because each part of our body gives us pain. समझ रहे? For each part of body there is a specific doctor. Imagine करके देखो. Yes or no? Every part of body will definitely give us pain. That's why they are there. Now सब means एक बार मैं I went to some college. I think your college or I think IEM. So we have the similar seminar over there. So at that time before Corona, we used to have like orientation day. So there different departments of seminar होता था. So we asked them one question कि how many of you have never fallen sick, were not a headache? किसी ने हाथ नहीं उठाया. Suffering is there, right? Every one of us are suffering, है ना? So we are suffering, but where is suffering coming from? What is the purpose of life? This should be the main question. Okay. If you are doing an inquiry, then you are promoted to higher life. But if you don't do the inquiry, just like animals only, demote to lower species of animals. So human being can develop the reasoning power to ask the following questions. Why am I suffering? What is the goal of life? So till now we have discussed different human and animals. Okay. So we have found that human beings का superiority क्या है? What is the main difference? Inquire about God.
why am I suffering, what is the goal of goals of life, purpose of life. correct. So this is the main difference. Animals can't inquire this thing. Okay, so now let us go with this question. Okay, first of all, why am I suffering? ठीक है. So um, if you see, I had one slide I will show you somewhere. It is in the ahead that there is like we say mother nature, because nature is our mother, and father is God. God is our father, and when we harmonize with both of them, then our life will be happy. But हम लोग का इतना intelligence है, but what we are doing with the intelligence, we are actually exploiting mother nature, right? Because of our greed, we are doing that thing. So from there, we are actually giving rise to our own problems. So let me slide. So now आप लोग बोल सकते हैं लाइफ का रियल प्रॉब्लम्स क्या है. लेट मी फर्स्ट चेक आपका थिंकिंग क्या है. एक एक प्रॉब्लम आप व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू. तो सोच के बोल सकते हैं. ये शादी तो यू ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यू लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि मेरा नल में पानी नहीं आ रहा है, प्लम्बर को बुलाना है, नॉट सच थिंग्स. ओके, जेन्युइन प्रॉब्लम्स. तो वो हंगर एक प्रॉब्लम है. कौन सा प्रॉब्लम? हंगर एक प्रॉब्लम है. मतलब अगर मान लीजिए कि मतलब किसी को भूख ही ना लगे, कोई खाए ही नहीं, मतलब अगर ऐसा हो कि हम खाएंगे नहीं तो मरेंगे ही नहीं, तो वैसा टाइप का एक प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, हंगर इज अ प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. आप दोनों People are seeking for peace. So they are disturbed. Okay, क्यों disturbed है वो लोग? मतलब खुद के एक्टिविटी से ही डिस्टर्ब है, मतलब डेली जो करते हैं फिर भी पीस नहीं है. ओके, कुछ ना कुछ सफरिंग लाता ही ये लगा हुआ. नीतीश आप फिर तो बीमारी, ये सब डिजीजेस भी प्रॉब्लम है. तो मुझे कोई भी मतलब बैड हैबिट है उसी को रिपीट जो होते रहता है वो बैड हैबिट्स हाँ, bad habits आपके लिए प्रॉब्लम है. लोगों को प्रॉब्लम है. ओके, उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. तो सी वी आर सेइंग ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल इन मेरे घर में देयर वाज अ किटन, स्मॉल किटन आई थी, बिल्ली. ओके, बिल्ली का इंटेलिजेंस होता है. यू नो हाउ द कैट, राइट? इफ यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल एंड ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग मिल्क, उस टाइम को आएगी नहीं. वेरी नाइसली क्यूट कैट विल बी सिटिंग ओवर देयर. Once you just get up for doing something, you just jump and you will eat it and run away. See, they have rational intelligence. Yeah. So it came inside. So I have a long stick रहता है जिससे हम लोग पकड़ी के जाल सब निकालते हैं, लंबा स्टिक. उसके आगे कुछ बुशी टाइप का कुछ रहता है. हाँ, तो उसको ऐसे उसके मुंह के सामने रख के just I was just pushing it. So it was just hitting that bushy substance. Okay, it was saying that is the main thing causing me suffering. But did not know. मैं जिसको push किया and then it just fell down and ran away from there. So did not know कि उसके पीछे एक long stick and I am pushing that thing. वो सोच रहे कि that is a problem, but there is some other reason behind the problem. है ना? समझ रहे? जैसे कि अगर आप स्कूल में होमवर्क नहीं करते तो आपको टीचर मारती है, तो आपको लग रहा है मार प्रॉब्लम है, और उसके पीछे रीजन क्या है, कॉज क्या है कि आपने होमवर्क नहीं किया है. राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज. आईटी में आपको यही करना है आगे, रूट कॉज एनालिसिस. कुछ भी एरर आ गया, गिव मी रूट कॉज एनालिसिस, क्लाइंट बोलेगा. पीपल अगर समझे मैं आपको आंख बंद करेगा, आपका आंख बंद करके आपको बुलाया और मैं आदित्य, नीतीश, मैं आदित्य और आशीष यहाँ पर है, एंड देन समवन केम एंड पिंच्ड यू, सो यू आर फीलिंग द पेन. व्हाट इज द कॉज ऑफ पेन? आपको पता नहीं किसने किया, बट सम पर्सन हैज डन, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द पेन, राइट? So in this way, different ways के वजह से हम लोग को प्रॉब्लम आता है.
People are getting cancer because they are smoking or doing some wrong activity. Bad lifestyle के वजह से people are getting STDs. There are more than 30 STDs, AIDS and all such sexual transmitted diseases because of illicit sexual relationship before marriage, after marriage, all this thing. So all these problems are coming. अभी कोई बोल सकता है कि प्रभु जी हम तो ईमानदार आदमी हैं, हम तो सब कभी किया नहीं, फिर मेरे लाइफ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि नहीं? वी कैन से सच थिंग राइट? ये आदित्य, मेरे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है? मैं तो मरना नहीं चाहता, फिर भी मैं मर जाऊंगा एक दिन, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? पूछ सकते राइट? सो तो यहाँ पर देखिए, so problem now we'll define the problem now. Okay, a problem can be considered a real problem if it fulfills the following 3 criteria. First, it should be common to everyone. Animals, human beings, it should be common to everyone. Okay, nobody wants it, but everybody gets those problems. The second criteria. और third है कि nobody can avoid it. Okay, ये 3 criteria है. अगर ये 3 criteria रहेगा, then it is a problem. So can you identify the 4 real problems of life that fulfill these criteria? ये 3 criteria है कि वो सबके लिए common है. वो problem सबके लिए common रहेगा, ठीक है? आप चाहते नहीं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए, पर प्रॉब्लम आपके लाइफ में जरूर आएगा, और आप न चाहते हुए भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको सफर करना ही पड़ेगा. तो ये 3 क्राइटेरिया जो है, इसके ऊपर बेस्ड 4 प्रॉब्लम्स है लाइफ में, रियल प्रॉब्लम. एक तो हो जाएगा डिजीज, हो जाएगा और एजिंग. ओके, करेक्ट, डिजीज और एजिंग यानी कि ओल्ड एज. ओके, 2 उन्होंने बोल दिया, और 2 डिजीज एंड ओल्ड एज बोल दिया है, और 2 प्रॉब्लम्स क्या है? गेस करो. ये 3 क्राइटेरिया सबके पास कॉमन है, वो आप उससे बच नहीं सकते. डेथ, करेक्ट. डेथ, बर्थ, परफेक्ट. बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, these are the basic problems. ऐसा नहीं कि पीस नहीं मिल रहा है प्रभु, ये और सबके लिए कॉमन हो गया, but this is the main, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे. जैसे कि देखिए, this beautiful young woman got into old woman, Arnold, nice tight biceps and everything, सब lose हो गया अभी. So we want to remain young forever, but very soon we start growing old and our bodies become weak and frail. This beautiful young couple, how they're looking now, see. They can't avoid old age, right? Can't avoid it. And we no longer look beautiful. So there are so many, why the क्या बोलते हैं, cosmetic industry is booming so much. Head and Shoulders में profit बना रही है, Lakme बड़ा, even they are fashion show भी कर रहे हैं just by selling that shampoo and some cream. Why? Because you don't want to get old. That is the fear people have. We don't, but न चाहते भी हम बूढ़े बनते जा रहे हैं. We are dying every day, right? Now 5 minutes back you were younger than what you are now. You have become old. Bring this thing. I see there was an American Texas millionaire. He spent $millions of dollars in vain to research on stopping aging. Aging to stop करना था. He was 72 years old businessman. Someday I will tell you a story about this man. Okay, what all things he has done. Very dangerous things he has done. Okay, so aging stop करने के लिए उसने इतना labs खोल के बहुत कुछ किया, but he cannot stop it. He has a lot of interest in his business, but he cannot stop it. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं, राइट? We take selfies, we take photographs so that जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हम जवानी में ऐसे थे. हाँ? So our body grows from childhood, boyhood, youth to old age, eventually bringing about death and leaving only bones. ऐसा fact है कि नहीं? So we want to remain healthy, but then we get diseases. जैसे आपने बोला, बीमारी आएंगी. We cannot avoid, we cannot get away from diseases. Then there was an article in Indian Express ki when you become old, right? Abhi now we are young. So after every 8 years, all the cells of our body will get changed. All change. Means actually you are getting a new body. समझ रहे? अब जो cells है, all of them will get changed. वो मर के नया cells आ जाएंगे. But when you become old, right, when we cross 50,
this process becomes more faster. The cells which are dying are more and the cells which are generating are less. And scientists ने बहुत research किया इसके ऊपर, how to stop this process of aging of the cells. This is the main reason we are becoming old, but उसको stop नहीं कर पाए. यहाँ तक रिसर्च गया, how cell तक रिसर्च गया, सेल को कैसे मरने से बचाए, how can you produce more cells that people not become old, but in vain they cannot do anything. Okay. If like I was saying to my friends few voice में dude इसको बोल रहा था कि around maybe 1 month back I'm working in Cognizant as senior developer and I had one of my colleague, so we worked in 2 projects back to back. So he also came in my project. He's 2 years senior than me. So he has just recently got married 1 year back, had very nice what you say plans for future, car kharida abhi just, and he got promoted. I'm senior developer, he just got promoted like 3 months back, promoted to technical lead. हमारे टीम को technical lead बना, client से बात करना, all those things, and we were having regular conversations, coding कर रहे, doubt solving, all those things, logical problems, doing everything. And he used to share very good things. When we used to go in our campus, we used to go out and just like roaming in evening में, walks and all in the garden. So all of a sudden 1 week से he's not showing up. Work from home चल रहा है. He's currently in Andhra Pradesh. He was currently in Andhra Pradesh, not showing up. So our manager got concerned. Then they somehow contacted him and asked him. So his family member replied that he is ill. थोड़ा sickness है, इसके वजह से कर नहीं पा रहा है. But now the pressure is mounting on us. We are just developer, senior developer, is the technical lead. He has to communicate with clients, सब कुछ manage करना है. Then like the 20 days passed away. And then still we don't know what is happening. And one fine day the email comes that he passed away. He had got dengue and all of a sudden platelet इतना कम हो गया, less than 10,000, and he passed away. So we have so many plans. He had so many plans that he just wanted to have a child also. Everything plan करके रखा था. एक लैंड खरीद के लगा था आंध्र प्रदेश में, वाइजाग के पास की प्लॉट, वहां पर लेके वहां पर घर बनाएंगे, everything. But just a strike of death and everything went away. समझ रहे? So we may think that अभी तो हम 20-25 साल के हैं, 80 साल तक उम्र हमारा कितना बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हैं. No sir, any time death. He was 30 years old. I'm 28. He was just 30. See, young wife, 1 year हुआ marry करके, and then she just passed away. So this is how insurance company are making us fearful. Why insurance company is growing? जीवन बीमा कभी भी मौत हो सकती है, गारंटी नहीं है. यदि इंश्योरेंस कंपनी का इतना ग्रोथ हो रहा है, because of this simple purpose. कॉस्मेटिक्स बूढ़ा होने से बचाएगा, इंश्योरेंस कंपनी डेथ के फियर से हम लोग करेगा. So this is the main thing. So now, like that, told you this even birth is problem. I'll show you some video later on. The birth has more suffering than death. How the soul suffers. भागवतम के 3rd canto में I will show the shlokas and all. पूरा एक chapter उसके ऊपर है. कैसे सफरिंग सोल सफर करता है. डेथ में कुछ नहीं है. जस्ट आपको 40,000 बिच्छू काटेंगे तो कितना पेन होगा ना, वो पेन करके आप मर जाएंगे. ठीक है. बर्थ इज मोर पेनफुल देन दैट. में ज्यादा वो प्रॉब्लम होता है कि मारने बर्थ में प्रॉब्लम होता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट वंस वी जस्ट गेट बोर्न वी फॉरगेट एवरीथिंग. That is this all things will come in your session. कैसे scientifically क्या है इसके पीछे, reason क्या है, all these things will come. Okay. So one who can perceive the path of birth, old age, disease and death as the real problems of life is in knowledge. भगवद गीता के 13th chapter के श्लोक नंबर 8 से 12 में ये दिया गया है. ये तो आहार निद्रा भाई मैं तुम पहले बोला था, तो महाभारत के श्लोक से हमने इसको प्रूव कर दिया. ठीक है. Now birth, old age and death are common problems we have proved from Bhagavad Gita. Okay. So now if we analyze our life, we constantly are tormented with. Okay. Now we'll speak about these different things. तो इसका आप सीक्वेंस याद रखो.
पहले क्या है कि 4th नेचर कॉमन, eating, mating, sleeping, defending. Okay. Then 4 problems of life: birth, old age, disease, and death. Okay. Now all these things happen. Now, now we'll come to the threefold miseries. Okay, threefold miseries that we are suffering. So now first is this one. आदि, इसको शास्त्र में बोला गया है कि आध्यात्मिक क्लेश. आध्यात्मिक क्लेश मतलब मिसेस ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड. ओके, वो तो प्रॉब्लम्स होगा लाइफ का. नाउ कम्स टू सफरिंग. अभी सफरिंग क्या है? ओके, आध्यात्मिक क्लेश मतलब हमारे खुद के शरीर और माइंड के वजह से हो रहा है. मेंटल इश्यूज सब लोग को नाउअडेज, बॉडी से ज्यादा मेंटल इश्यूज है बच्चों में. ऐसा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं. 751 यूथ, out of that 405 are struggling with their mental health. 54%. India today, suicide rates have tripled in past 25 years. Adhyatmic klesh, heart attack, cancer, all those things. Then this is Adi Bhautik klesh. ये सब प्रभु जी दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा. बढ़ते ही जा रहा है अभी. बढ़ते जाएगा ही. Adi Bhautik klesh. Adi Bhautik klesh means suffering caused to us by other living entities. इसका डेफिनेशन याद रखो. आदि आत्मिक मतलब by our own body and mind. This is Adi Bhautik means because of others, other living entities. Mosquitoes, snakes, some other people are robbing us, cheating us, terrorists, all these things. Adi Bhautik klesh. Sorry, Adi Daivik klesh means the klesh that we get because of mother nature. Nature से क्या हमको problems आता है? Because we are exploiting the nature. I'll just show you one small video on this. Let me just open a small video. Adi Daivik klesh. Okay. Let me tell if you're able to see. देख पा रहे स्क्रीन? It started off as a shake and then really turned into a swing. Large chunks of buildings fell to the streets as people rushed for cover. The skyscrapers nearby were swaying like trees in the wind. I did think at one point that I really might die here. And then round 2 as the tsunami sirens wail. You're seeing live footage of a tsunami engulfing the port area. When the ominous Black Sea attacked this island nation Friday, it left behind a massive trail of destruction that is getting worse by the hour. A giant tsunami wave crashes into the Fukushima Daiichi power plant, seriously damaging the building's reactors. The Japanese Prime Minister Naoto Kan said today the disaster is the worst crisis for Japan since World War II. The tornado warning means that a tornado has been spotted heading for your area. Seek shelter and This has been the country's worst and deadliest tornado outbreak since the Great Depression. Governor Deal declared a state of emergency in 16 counties. You think the death toll will go up? Yes, sir. We do. Oh gosh, that is a monster tornado. The tornado moved slowly 6 miles through the center of Joplin. The town is now effectively cut in half. It was just crazy. It was like a jumbo jet was landing on your house. It's just flattened. I really was not prepared for what I saw when I got down here. Search and rescue crews sift through the rubble trying to locate missing loved ones, and the death toll moves past 100.
It is a huge monumental flood. We're living historic times at this point. We've almost had a foot this morning, and it will continue to rise and inundate areas of the city. We're seeing entire trailer parks engulfed with water, people having to grab their belongings and move out. We need FEMA, we need Red Cross, we need every kind of help that we can get. You don't give up on your home. Keep fighting. The floor is trembling, and the rocks are falling down. Good evening. The New Zealand city of Christchurch has been reduced to ruins by an earthquake, with dozens killed and unknown numbers of people still trapped in the rubble. Can you call out to us, please? The center just a few miles from this city of several 100,000 people. I mean, looking around the houses, you know, people hysterical. No. Magnitude 6.3 quake left a lasting impression on the lands. So any intelligent man can ask this question, right? Why are we getting this? Now we have defined suffering into 3 categories. As per Shastras, suffering को define कर दिया. आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक. So any intelligent man will ask this question: क्यों हम लोग को ये suffering हो रहा है? Although we have advanced medical science and have latest technology, engineering, medical मिला के इतना सब कुछ instruments अलग-अलग देखे कितना complications आप करके देख सकते हैं, पर उसके बाद भी still our plans of good health and happiness are always thwarted and newer and newer diseases आते जाते हैं. Yes or no? है ना? Muhammad Ali used to always say that I am the greatest. Then what happened to him afterwards? He died suffering from Parkinson disease. देखिए वो जो ओलंपिक का टॉर्च वो उठा नहीं पा रहा है, पूरा एक कप ऑफ कॉफी भी उठा नहीं पाते. Then at last he said that I did everything. I thought boxing was the goal of my life, but I said I'm the greatest. Yes, I'm the greatest fool. This was the realization before dying. Even Mike Tyson, एक YouTube पे video है, as you can see, he showed all his trophies, medals, everything in his boxing, wrestling, whatever it is. दिखा के journalist को बोल रहा था कि these all things were the goal of my life, and they just threw. Now it is waste for me. Nothing. There's no use of all these things. So they are realizing it, even after getting towards so much success. So why do even such great personalities suffer from problems? Painkillers, tranquilizers, road accidents, all this is happening, right? क्यों ये सब हो रहा है? Scientists लोग बोलते हैं कि you can read it, what the scientists are saying. One scientist said, now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater in a submarine. The only problem is he can't walk on land like a human being because of pollution. Correct, because of pollution he can't. So he has made solutions. जल्दी जाना है तो करो, submarine से जाओ. It is a patch-up solution. Main solution तो नहीं है, right? Just for example, I heard this in one of the class of Adesham Prabhu कि there was a beautiful woman going in front, okay, and 18-year boy, he saw her and he got attracted. She has long hair, she was tall in height, very nice dress, clothes, everything, and he started following her. And then this beautiful woman, she went into her home, and then this boy was very eager to see her. So he opened the window and he saw what she is doing there. Just like how boys are there. He just opened the window and saw. And he saw she removed her heels. Just as she removed her heels, height come ho gaya. She became short. So she was not actually tall. Then she removed her wig. Actually, it was not tall. It was not long hair. It was a wig. She had white hairs. जब गॉगल निकाला, आंखें अंदर गई हुई है. Okay, अंदर अपने दांत से जो रहता है ना आर्टिफिशियल टीथ निकाला. She was not an 18-year-old woman. She was an 8-year-old old woman. So देखिए, we can use all these cosmetics, clothing, everything, and externally we can make us look like we are not going towards death or we are not becoming old. Internally,
we are having the same problem, right? We can't stop it. Yes or no, Aditya? So all this scientific advancement, they can just give a patch-up solution. Yes, brother. बस एक पैचअप कर दिया, wrinkle होता है तो wrinkle का क्रीम लगा लो एक अच्छे से, थोड़ा wrinkle कम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, पैचअप, wig लगा दो, nail paints लगा दो, all those things, right? So science can't solve the real problem of our life. Yeah, this thing was what I was telling you. A mountain of 6 million tires, अमेरिका में, इतना वो लोग उसको ये करके फिर they then burn it or I don't know what they do with it. So all these things are happening. Science has invented bombs that can only blast the living bodies into pieces. बहुत rarely उसका ये करते हैं, mostly terrorism attack में होता है. तो यहाँ पर just एक क्या बोलते हैं analogy है. Old age white hair हो रहा है, scientific solution क्या है कि hair dye लगा के उसको ये कर दो. Wrinkles आ रहा है तो face lift लगा के उसको ये कर दो. Disease back pain है तो पेन किलर्स यूज करो, पेन किलर्स. और स्टमक पेन, ब्रेथलेसनेस, डेथ है तो आपको ऑक्सीजन ट्यूब्स आपको यूज करना पड़ेगा. ऑल दोस थिंग. सो दिस इज जस्ट अ पैच अप सॉल्यूशन. सो वी नीड सम रियल सॉल्यूशन और नॉट? यस. ये बिल्ली आईने में देख के इमेजिन करे कि मैं एक टाइगर जैसे हूँ. दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल रियलिटी, है ना? सो द this is how people are being foolish. आप रीड कर सकते हैं नीतीश? Science and technology cannot stop old age, cannot eradicate disease, per se from earth, hardly have understanding of life and death. So science and technology don't have it. Correct, they cannot do that. जैसे कि देखिए ये एक क्या मिट्टी का महल बना है, but it's temporary. Just like that, we are doing so many things which are temporary on this earth, right? Luxuries and comforts offered. Just like अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर देखिए फोटो है एक फिश का. अभी आप अगर इस फिश को पानी के बाहर निकाल के उसको देखो यहाँ क्या है कि हॉट डॉग दे रहे हैं, उसको सिगरेट दिया हाथ में, पैसे दे रहे हैं, उसको चेयर पे बिठाया, मूवी टिकट्स दे रहे, सब कुछ कर रहे. कैन द फिश बी हैप्पी? नो, राइट? यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, luxuries and comfort offered by science and technology cannot satisfy the soul as much as a fish taken out of water cannot be satisfied by any kind of facilities for enjoyment. The soul can only be satisfied and happy in spiritual world, which is the natural home, just as the fish will naturally be happy when it is put back into water. अभी समझ में आ रहा है why we are suffering over here? Because this is not our natural place. So let me check the next one. Yeah, the wise and the foolish. Just take difference दिया गया. The wise believes in God. The foolish has no faith. Lives according to God. Follows, eat, drink, be merry philosophy. एक बार साइम ट्रू या सुमित्रो भी बोल देंगे, क्लास में लेट हो जाएगा. Then remembers क्या लिखा है? Remembers temporary nature of the world, but he forgets the temporary nature of the world. आदमी ये forget कर देता है, भूल जाता है, right? Just for example, now we are actually dying every day. Every day morning we read one book before meditation. उसमें मैं एक बार पढ़ा था कि it is like अगर कोई इंसान एक सांप के पाइथन पता है, पाइथन एनाकोंडा which swallows the whole human being body. So आप समझिए कि अभी आप उसके मुंह में है, आपके पैर घुटने तक उसके मुंह में गया है, ओके? और आपको कोई लाके दे रहा है, पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, कंप्यूटर गेम्स खेलो, all those things. क्या आपको अच्छा लगेगा? You would like to come out of its mouth, right? But we are doing the same thing. Death has come as snake has come as time, Kal, and there's followers already, right? We are 20 years in the mouth of the 20% in the mouth of the snake already. But what people are doing, same thing. How can I be happy? You cannot be happy. You're going to die now. You have to find a permanent solution. That is what the Vedas are saying. That is where we are progressing now in this session. What will be the permanent solution? Okay.
जैसे कि this was one of the example. There is one more very beautiful example I will tell you. Okay, next slide. The foolish knows that he will die today or tomorrow, but still he want to enjoy. It is just like a bubble blip. फूट जाता है, सब डिम चला जाएगा उसका, जो भी उसने अलग अलग सोच के रखा है. All those things. We want to lord over the material nature, and we want to control things without caring for God, who is the real proprietor and controller. गीता भगवान बोलते हैं कि मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया. I am the controller, proprietor, enjoyer of the whole world, whole creation. But no, we don't want to believe that. जैसे कि हम just like what you say, there was a train journey. Yeah, see here. एक हम लोग ने फोटो निकाला था कि ट्रेन में जब जर्नी करते हैं, so we have compared it with a life analogy. So as the journey happens, one person will get on a particular stop, right? So in the same way, we also are in a journey of life now. हम ट्रेन बोर्ड कर चुके हैं, पर अगर हमें पता नहीं कि हमें कहाँ पर उतरना है, लाइफ का गोल क्या है, all of a sudden stop will come and we have to get down. That is our death. समझ रहे? Just like this, even this example of this goat. अगर यहाँ पर 25 गोट को रख दिया है, सबको घास खाने को दे रहा है, और पहले गोट को काट के कर रहे हैं, तो बाकी गोट का असर नहीं हो रहा है. They not having any effect, right? वो अपना घास खा रहे हैं आराम से. They not even bothered कि मेरे बाजू वाले गोट को अभी हत्या कर दिया. उसी जगह पे हम लोग को रख दे, 25 लोग को, सब लोग आइसक्रीम दे दे हाथ में, आइसक्रीम खाओ. और पहले लड़के को लेके कुछ मार रहे हैं, अब गला काटने वाले, हम लोग क्या करेंगे? आइसक्रीम खाएंगे, वहां पर भाग जाएंगे, राइट? दिस इज द इंटेलिजेंस विच वी हैव, बट वी आर नॉट यूजिंग द इंटेलिजेंस. दैट इज अ मिसफॉर्च्यून. दैट इज व्हाट मींस द मेन थिंग. ट्रेन जर्नी, दिस वन, एंड इवन द ग्रेट पर्सनालिटीज, दे हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. जैसे कि अलेक्जेंडर वाज देयर, सो ही हैड 3 रिक्वेस्ट. अलेक्जेंडर, उन्होंने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो सबसे पहले लोगों को दिखाइए कि माय हैंड्स आर एम्प्टी बिफोर डाइंग. मुझे कब्र में खोलेंगे तो मेरा हाथ खोल के मुझे दिखा कि मेरा हाथ एम्प्टी है. जो वैद्य डॉक्टर ने मुझे क्योर किया था, मेरा ट्रीटमेंट करा है, उसको मेरे कब्र तक लेके आइए और फिर उसको वापस भेज दियो कि वो कब्र तक आया पर मुझे क्योर नहीं कर पाया. समझ रहे? ही वांटेड टू लेट द वर्ल्ड नो दिस थिंग. और मैं जितना भी धन कमाया है, collect all of it, make a heap of it, and bring it to my graveyard, and I can take it back because I cannot take it back. So these great personalities, even they are identifying this thing. Isn't it a fact? Yes. So we are suffering these 4 miseries: birth, old age, disease, and death, and these 3-fold sufferings. Why we are doing this thing? Because there's a simple thing that we are not following the laws of God. Yes? Basic thing. The suffering क्यों आ रहा है? We suffer the 3-fold miseries and 4 real problems of life due to acting sinfully against God's law. Sin का definition क्या है? पाप का definition. Any activity which we do is against the law of God. That is called as sin. Prisoner को जेल में क्यों डालते हैं? Because he's breaking the law of constitution का law break किया. That's why he's put into prison. Similarly, we have broken the law, we have done some sin. That's why we have come into this prison of this material world. समझ रहे? So this is the thing. So now align with God, भगवान का जो laws उसके साथ when we align, then only we can change this scenario. Then only we can come out of the suffering. Okay. So this basic thing we need to understand that. मैंने last session में बोला था कि like अगर आपका ये शर्ट है, कुर्ता का एग्जाम्पल है, राइट? If it is getting torn, what you will do? Will wear a new shirt. Similarly, if the body is getting old, we get a new body. So who are we? Are we the shirt? No. You are Ashish. But Ashish is not the shirt. Ashish is not the mind. Ashish is not even the body. Ashish is the soul. That we have to understand. If we understand this basic thing, then it will be very easy for us to get out of the problem. तो पहला प्रॉब्लम हम लोग ने उसका सोल के पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस होता है. Yeah, soul has intelligence. Yes. See, God has given you independence. Okay, means
what you say, God is independent and he have given us minor independence that we can take our own decisions. But now that independence intelligence is getting covered by this material things which are there around us, bad association and all those things. जैसे कि सूर्य का light is very strong, but अगर अभी वो cover हो जाता है तो it will become dim. Similarly, our intelligence become blunt because of all this wrong association and wrong habits, all those things. So पहला जो क्वेश्चन था, why am I suffering? उसका सोल्यूशन हम लोग को मिल गया, because we are not aligning with the laws of God. ठीक है. Now what is the goal of life? ठीक है. आपका गोल का लाइफ है कि लाइफ का गोल है कि अच्छे से इंजीनियरिंग बन करके सब कुछ करना है ना? तो देखिए कृष्ण भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं. Lord Krishna taught to Arjuna that you are not the material body, you are imperishable soul in the beginning of our Gita, and freed Arjuna from all the stress and suffering. Okay, you are the soul, your body is just like a shirt, जैसे मैंने अभी just बोला था. Just as you change the shirt when shirt gets old and torn useless, similarly you change the body after death. ये भगवद गीता में है, डिटेल में दिया गया है. माम उपत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अश्वासतम. Dukkhalem ashwasatam means this material world is temporary and full of miseries. तो दो चीज बोला गया, दुःखालयम and ashwasatam. अब can you recognize this thing? जो भी चीज है इस दुनिया में टेम्पररी है कि नहीं? वो एक चीज मुझे बताओ जो परमानेंट है. एवरीथिंग, इवन प्लास्टिक इज टेम्पररी, डिग्रेड होता है कुछ टाइम के बाद. प्लास्टिक के बॉटल का शाइन चला जाता है, राइट? एवरीथिंग इज टेम्पररी. दुःखा एंड इट इज दुःखालयम, फुल ऑफ सफरिंग. तो ये शास्त्र में इसका डेफिनेशन दिया गया है. डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज दुःखालयम अश्वासतम. यहाँ पे उसका श्लोक का मीनिंग देखिए क्या है. आदित्य क्या पढ़ सकते हैं इसको? इसका ट्रांसलेशन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है. जी प्रभु. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Bhagavad Gita, chapter 8, verse 15. Correct. So what these things we are doing over here, giving a guidance or what we are practicing, this is to attain the Supreme Personality of Godhead. Once we attain to that, then we will not face these miseries and problems. Okay, we'll automatically get out of this. ये आपको फिर सेशन में बताया जाएगा how we can actually apply this thing. Simple देखिए यहाँ पर एक analogy करके दिया है. What is the actual destination of life? तो कार और ह्यूमन बॉडी को एक समान एनालॉजी किया है. समझिए अभी कार गिवन बाय कंपनी, उसी प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी इज गिवन बाय गॉड, है ना? कार का ड्राइवर होता है एंड सोल जो है वो बॉडी के ड्राइवर है. यस और नो? यू एग्री दिस थिंग, राइट? देन क्लीनिंग एंड पुटिंग पेट्रोल कार में करते. सेम थिंग बाथिंग एंड पुटिंग फूड इन अवर बॉडी. वी क्लीन द बॉडी एंड वी टेक फूड. टेकिंग टू गैरेज फॉर रिपेयर, गोइंग टू डॉक्टर फॉर डिसऑर्डर्स, कार में और ह्यूमन बॉडी में. फिर what is the purpose of car? आपको कार कंपनी ने क्यों दिया है? to go to the company. और what is the purpose of our human body? return back home to our spiritual world. that is the main thing. but now अगर आप क्या करें, कार का ग्लास को ब्रेक कर देंगे with a bat, if you do all those things, then what will the company do? कार छीन लेगा आपसे, है ना? सिमिलरली अगर आप सुसाइड करेंगे अपना जो ह्यूमन बॉडी को, रिसेंटली कुछ सुसाइड हुआ था, मैं कहीं सुना कॉलेज में कहीं पर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इसमें आया था. आपका कॉलेज है किसी और कॉलेज में? एक लड़की, हाँ वो नहीं, एक सुसाइड भी हुआ था. हाँ, सो आई हर्ड दिस थिंग, सुसाइड हुआ था रिसेंटली. मतलब आपके बैच के 3 बैच सीनियर, देयर वाज वन बॉय स्टेइंग ओवर हियर. ओके, सो वो पहले अपने मेस में रहता था. बॉयज में तो बाद में वो रहने लगा, पर उसके पहले अपने मेस में रहता था. सो हिज रूममेट वाज वेरी फैट बॉय, नाइस बॉय. देन 6 महीने में देखा, जस्ट 1 सेमेस्टर में बिकेम वेरी लीन, स्मोकिंग सिगरेट, एक पैक खत्म कर एवरी डे, एंड वन डे कमिट सुसाइड. ऑल ऑफ देम रैन फ्रॉम द मेस. मेस से सब लोग भाग गए जस्ट बिकॉज ऑफ वन गर्ल. सिविल डिपार्टमेंट का है. इफ यू फाइंड सम ऑफ योर alumni, meet मेरे को आएगा ना alumni, you can ask them, civil department, they will tell you this thing. Suicide. So we think that suicide करने से will get relief from the problem, but it is not true. और जैसे कि आपने suicide किया है, then
you have, this is a property given by God. Your body is property of God. Okay. Now destroying the property of God, so you'll be punished for that, and you'll be put in a situation where you don't have the body. इसको breaking the glass of a car with bat. मतलब आपको एनालॉजी समझ में नहीं आएगा? नहीं, मतलब स्टार्टिंग से समझे, लेकिन वो जो आप कंपेयर जो कर रहे हैं ना बॉडी से, ओके देखिए, कार और ह्यूमन बॉडी को कंपेयर किया गया है, ठीक है। आपको कार दिया गया, आपने आपसे आईटी कंपनी में जॉब मिल गया, आपको एक कार और एक बंगला दे दिया है, ठीक है। वैसे भगवान ने हमें एक शरीर दिया है, जिस शरीर और कार को कंपेयर करो अभी, ठीक है। तो कार का ड्राइवर कौन है? आप है। वैसे शरीर का ड्राइवर कौन है? सोल, आत्मा है। फिर कार को हम लोग क्लीन करते हैं, पेट्रोल डालते हैं उसके अंदर। शरीर में हम लोग खाना खाते हैं, नहाते हैं, यस और नो। फिर कार को हम लोग गैरेज में जाते हैं रिपेयर कराने के लिए, मेंटेनेंस। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी या कुछ आ जाती है तो बॉडी का मेंटेनेंस करने के लिए। तो कार का एक्चुअल पर्पस क्या है कि मैं कार में मेरे घर से कंपनी में जाऊँ, इसलिए कार दिया गया। वैसे हमारा बॉडी का पर्पस क्या है? यूटिलाइज आवर बॉडी, डू ऑल द एक्टिविटीज। आप अच्छे से फैमिली का टेक केयर करो, जॉब करो, एजुकेशन करो, डू एवरीथिंग, बट द गोल शुड बी दैट आई शुड टेक दिस बॉडी बैक टू गॉड। भगवान के धाम में लेना चाहिए, नरक में नहीं जाना है मुझे। आई वांट टू गो बैक टू गॉड। समझ रहे हैं ना? दिस इज द एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ। बट अभी क्या किया, आपने बैट लेके कार का कांच तोड़ दिया, तो कंपनी क्या करेगी? कार आपसे छीन लेगी, पनिशमेंट मिलेगा आपको। ऐसे मतलब कोई भी बॉडी अगर सुसाइड कर रहा है तो उससे दे टेक द ग्रॉस बॉडी। दिस इज अवर ग्रॉस बॉडी व्हिच वी कैन फील, बट वी हैव अनदर बॉडी व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। आपको फ्यूचर सेशन में आएगा। This is subtle body. Okay, so you are in subtle body now. Your gross body is taken away from you. Okay, now subtle body you cannot enjoy. Unless you are in gross body, you can eat and everything. In subtle body, you are feeling hungry, but you can't eat. You want to sleep, but you can't sleep. You want to enjoy association of some boy or girl, but you can't do that. So what that does, that is called as Preta or Atma. So that subtle body tries to enter into gross body of another person. बोलते ना कि भूत पकड़ लिया है आत्मा. It is actually truth. It is not something else. It is actually truth. They are in dimension more higher than us. Our world has 3 dimension. एक भूत लोक करके होता है एक planet. So they are in a higher dimension. So they can access our dimension, but we can't see them or we can access their dimension. It will come scientific way में आगे आपको आएगा सेशन में. Just एक मैं brief बोल दिया आपको. Similarly, अब आप कार को यूज करते हैं घूमने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ, कंपनी क्या करेगा? पकड़ा जाएगा तो फिर से कार ले लेगा, आपको डिमोशन कर देगा। सेम थिंग इफ यू आर एंजॉयिंग द प्लेजर्स एंड फॉरगेट द गोल ऑफ लाइफ, इट मींस यू विल बी सफरिंग ओनली एट द एंड। मोहम्मद अली के जैसे सफर तो करना ही पड़ेगा बाद में। और एनी अदर पर्सन हु इज डूइंग एक्टिविटीज, स्पीडिंग अप द कार एट 100 km/h, मिसयूज कर रहे बॉडी का और मींस कार का, then obviously company will again catch you. So living life like a rat race with no goal, it is just like that. वो चिड़िया के जैसे सुबह उठता है, खाना खाता है, डिफेंस करता है, रात में आके सोता है। सेम थिंग, सुबह उठ के जाओ, ऑफिस जाओ, मेहनत काम करके आओ, रात में आओ, थक गए, सो गए, फिर एवरीडे सेम थिंग। What is the use of that? Nothing, right? You are wasting your life. Speeds are, life speeds are, you will not, I am actually saying you, when you will get into working life, right? If you get into developing more, developer side में चले गए, if you are in support or in your testing में चले जाओगे, then life is little bit cool, okay? उतना pressure नहीं रहेगा. But if you go in developer, will कैसे पता नहीं चलेगा कि 1 महीना बीत गया. आपको लगा अरे अभी तो मार्च था, अप्रैल कैसे आ गया इतना जल्दी? That much, you will be so much busy. You will come to know in future. I will tell you some examples which happened with my colleagues, okay? Then painting, decorating, beautifying the car, never using it for job. अब वो कार दिया गया है, उसको स्टिकर लगा, सब कुछ करे, पेंट करे, पर उससे ऑफिस नहीं जा रहा हो, बस पकड़ के ऑफिस जा रहे, लेट पहुंच रहे हो ऑफिस में। हाँ, similarly decorating the body with ornaments, cosmetics and all, not using it to serve God. कार दिया गया है so that you can come to office on time, that's why they give you a car, but आप उसको यूज नहीं, बस से जा रहे। सेम थिंग, आपको बॉडी दिया गया है भगवान का सेवा करने के लिए, उसको ना यूज करके आप मिसयूज कर रहे हैं, then it will be totally in vain, right? So these are the main things. Analogy मैं आपको just दिखाना चाहता था. This is the thing that we all are doing.
taking care of only the material things, pampering the body but forgetting the soul. सब कुछ करे बॉडी के लिए. यहाँ पर एक दिखाया गया था कि एक सोने का पिंजरा है, वो पिंजरे को अच्छे से पॉलिश कर रहा है, पेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है आदमी. ओके, बट जो अंदर जो बर्ड उसको खाना नहीं दे रहा है, so bird will die only, right? They are doing same thing ना. हम खाना खाते हैं, जिम में जाते हैं. If you come addict, you get everything. Even I used to go in the beginning. कंपनी में स्विमिंग पूल है, हाफ एन आवर का एक ब्रेक लेके मैं स्विमिंग करके आता था. एवरीथिंग वहाँ पर जिम में आई यूज्ड टू सी पीपल आर डूइंग एवरीथिंग, कर रहे हैं, अच्छा कपड़े पहन के आएंगे, नाइस थिंग, बट स्टिल दे आर फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? व्हाई द बर्ड इज डाइड? बोलिए. उसने पिंजरे को पॉलिश किया पर बर्ड क्यों मर गई? बर्ड का ख्याल नहीं रखा, इसलिए मर गई, राइट? सिमिलरली हम लोग बाहर सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा सैलरी रहना चाहिए, सब कुछ है, बट व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड? सो मेनी. एक लिंकिन पार्क करके कुछ एक बैंड था बहुत साल पहले, आई वाज इन क्लास 9th or 10th, somebody from that lead singer committed suicide. People are, सब कुछ है उनके पास, but they are committing suicide, all those things. Why? They are frustrated, not happy in their lives. That is the main thing. यहाँ पर एक I'll like to narrate one small story to you here. So very interesting story. एक बार क्या हुआ था कि आदित्य, आप सुन रहे हैं, राइट? हाँ प्रभु, सुन रहे. हेलो. हाँ प्रभु. ओके, या. सो एक बार क्या हुआ था कि एक राजा था. ओके, सो वो राजा, he had a very nice empire. अपने कर्म को सबसे अच्छा एम्पायर मिला. He had multiple queens. He used to enjoy with the queens. He used to eat lavish foodstuffs, wear good clothes, and pride था, सब कुछ था, अच्छा था. तो एक साधु महात्मा जी थे. तो he understood that the king doesn't know the goal of his life. He is misusing his body. भगवान ने सब कुछ दिया है, but is not using this body to serve God. He is using it, misusing it. And उन्होंने जाके समझाने की प्रयास किया राजा को, बट किंग समझा नहीं कि अभी तो मेरे पास सब कुछ है. हफ्ते में एक दिन मंदिर जाके घंटी बजा के आ जाते, और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे पास है. He is just like that. So अभी राजा को सिखाना पड़ेगा. We need to teach the king. तो वो साधु ने क्या किया, उसने राजा को बोला कि ठीक है, आप मेरा बात इतना मत मानिए, पर एक काम कीजिए, आप ना अपने आप को खुश रखिएगा. खुश रखेंगे तो आपका लाइफ स्पैन और बढ़ेगा, विल बी मोर हेल्दी. सो आप एक काम करो, यू सर्च अ फूल. एक बेवकूफ आदमी को ढूंढिए और उसके हाथ में एक छड़ी दे दीजिए, और बस वो आएगा छड़ी, बस मूर्ख आदमी, मूर्ख को ढूंढिए, छड़ी दीजिए, हाथ में बस आके छड़ी ऐसे करेगा. समवन फूल विल बी फाइंड इन द सिटी समवेयर. तो अपने मंत्री को बोला. सो मंत्री सब कुछ गया और जाके एक मूर्ख को लेके आ गया, उसके हाथ में छड़ी दिया. राजा ने बोला, देखो तुम्हारा काम है, मेरे गुरु ने बोला है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. साधु ने बोला है कि बस छड़ी लेके आप बस महल में आते रहो, ये सब, मैं तो सैलरी देते रहता हूँ आपको. आई विल गिव यू, कीप ऑन गिविंग सैलरी. तो ठीक है, वो एवरीडे आता था, ऐसे ही महल में सब लोग को मनोरंजन करता था, बेवकूफ था, जोक्स करता था, लोग उसको चिढ़ाते थे. ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन. नाउ एक दिन राजा का उम्र हो गया, ही इज अबाउट टू डाई नाउ. सो वो बेड पे लेटा हुआ है, हिज क्वींस आर देयर विद हिम. तो राजा ने बोला, वो मूर्ख कहाँ पर है जिसे मैं अपॉइंट किया था, उसे बुला के लाओ. तो मूर्ख को बुला के लाया. तो मूर्ख आया अपना छड़ी लेके. तो राजा को बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है. तो राजा बोला कि मैं सब कुछ छोड़ के भी चले जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ. तो बूढ़े बोला, ठीक है, मैं आपके लिए रथ तैयार करता हूँ, रथ में जाओ. तो राजा बोला, नहीं, मैं रथ लेके जा नहीं सकता वहाँ पर. ठीक है, मैं कुछ खाना, कुछ टिफिन पैक कर देता, वो लेके जाओ. तो नहीं, वो भी लेके नहीं आ सकता. फिर वो बोला कि ठीक है, एटलीस्ट आप अपना कुछ संपत्ति लेके जाओ, रास्ते में काम आएगा. तो राजा चिल्ला रहे, मूर्ख तुम क्या बोल रहे हो, ये सब मैं नहीं जा सकता. आई कैन नॉट टेक ऑल दिस थिंग्स विद मी. आई एम गोइंग वेरी फार अवे. आई एम गोइंग टू डाई नाउ. तो राजा ने बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं तुमको भी रिटायरमेंट दे देता हूँ. तो अभी तुम क्या करो, ये जो छड़ी है ये तुम किसी और मूर्ख को दे दो, किसी और को छड़ी दे दो, और तुम रिटायरमेंट ले लो. तो मूर्ख क्या किया,
वो छड़ी लेके राजा को दे दिया। राजा बोला, और वो बोला कि ये लीजिए आपको दे रहा हूँ। तो राजा गुस्सा हो गया, क्या मैं तुम्हें किसी और को देने के बाद तुम मुझे छड़ी दे रहे हो? तुम सोचते कि मैं फूल हूँ, मैं मूर्ख हूँ? तो वो जो मूर्ख था वो बोला, ये तो आपने सच बोला कि आप ही मूर्ख है, कि आपने आपके लाइफ में सब कुछ किया, इतना धन दौलत है, आपकी क्वींस है, सोने का रथ आपके पास है, पैसा है, लैविश फूड स्टफ्स है, पर अब कुछ भी चीज आप ले नहीं सकते आपके साथ। आप ले तो जा नहीं पाएंगे कुछ भी जहां पर आप जा रहे हैं इतना दूर। तो आप तो महामूर्ख निकले ना। तब राजा समझा, अरे ये तो मूर्ख नहीं है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट मैन है। तो पूछा कि तुम कौन हो? तो बोले कि जब मेरे गुरुजी आए थे आपको बोलने के लिए तभी आप बात नहीं माने, इसके लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया टू बिकम अ फूल एंड जस्ट टू कम इन टू बी अराउंड यू। ओके, सो नाउ एक ही चीज है दैट यू कैन टेक विथ यू, दैट इज नथिंग बट सुकृति और स्पिरिचुअल क्रेडिट और पुण्य जिसे बोलते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन टेक विथ यू आफ्टर डेथ। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग। आपको ये शर्ट भी लेके आज नहीं आ सकते हम हमारे साथ, यस और नो? So then he started giving him knowledge of Bhagavad Gita, and at the last stage of the life, he's reading Bhagavad Gita, he's remembering God, all those things. So this is the main thing that all of us are doing in our life, like just like a Mahamurk. Yes or no? है ना Aditya? Are you there? So intelligent people know. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay. So intelligent people know that life is just a preparation and death is the examination. याद रखिए, it will not be online exam कि आप कॉपी करके पास कर जाएंगे डेथ को. You cannot cheat death. ऐसे भी कुछ हुआ था. I heard some scripture में कहीं पर ये लिखा था कि यमराज, the god of death, he came in one of somewhere this I heard in some class. Okay, he came with जैसे ऑनलाइन हम चीटिंग करते हैं ना, वैसे ही एक सिनेरियो आपको बोल रहा हूँ. He came there, लिस्ट लेके आया था, ऑफिस में आया, and he's a businessman. He knows how to speak with people and convince people and all those things. So लिस्ट लेके आया और टेबल पर यमराज बैठ गया कि आपका समय आ गया है, अभी आपको चलना है. तो उसने बहुत उसका पावनचरी किया. उसको अच्छे यमराज को खाना बोला, ठीक है अब मरना है तो क्या करेंगे, लीजिए आप थोड़ा, आप भी थोड़ा खा के मरते, आप भी थोड़ा लीजिए. उसको ढोकला खिलाया, ये किया, बहुत कुछ खिलाया पिया, पेट भर खिलाया. अभी बोला आपको थक गए होंगे, आप रेस्ट ले लीजिएगा. तो ठीक है, हाँ थोड़ा 1 घंटा रेस्ट लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको लेके जाऊंगा. तो ठीक है, रेस्ट लेने के चला गया. तो इमीडिएटली बिजनेसमैन जो चिट्ठी लिस्ट था उसके बाद यमराज का, तो उसका नाम सबसे पहले था, उसको काट के उसका नाम लास्ट में लिख दिया. तो उसका नाम को लास्ट में लिख दिया. अभी यमराज उठ के आ गया फिर से, तो बोला कि आपने तो मेरा बहुत पावनचारी किया है, इतना अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको नहीं रहता, मैं एटलीस्ट लास्ट से शुरू करता हूँ, आपका नंबर लास्ट में आएगा. तो उसने तो आपका नंबर लास्ट में लिख दिया था, आपका नाम. So what happened? He became the first one to die again. समझ रहे? So you cannot cheat death. It's not an online examination. समझ रहे? Only intelligent people can understand this thing. But fools. हाँ. ये मूवी कोई हीरो लोग है, देखो. मैं किसी क्लास में सुना था, just I don't know. So, but we are living like ostrich. You know ostrich bird? जब वो जंगल में जाती है, जब रहती है, जब शेर कोई आता है उसके पीछे डिस्कवरी में देखा हो, क्या करती है? वो भागती नहीं है, वो जो जाके अपना सिर को ना मिट्टी में डाल देती है अंदर. हाँ, ऑस्ट्रिच शतरमुर्ग बोलते ना, शतरमुर्ग बड़ा ऑस्ट्रिच रहता है, उड़ नहीं सकती वो, बस थोड़ा पास दौड़ती है, तो जाके सिर को अंदर डाल देती है. उसको लगता है कि अब मेरा सिर अंदर है, मैं देख नहीं पाऊंगी, तो मुझे शेर मारेगा नहीं. बट शेर विल कम एंड ईट इट ओनली, राइट? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. That is how we are getting fooled. So foolish people think that they know that everything is temporary, but still they are mad after the pleasures of life. समझ रहे? They are still mad after the pleasures of life. So this was the second thing. Now coming to the conclusion of the session now, how educated Indians were diverted from putting faith in the Vedas. Okay. So I'll just show you one video over here. Aditya, मैं जो videos play कर रहा हूँ, you are able to hear those videos clearly? हाँ प्रभु, साउंड आ रहा है सब वीडियो का. Okay, so now I'm sharing this video. Screen पे दिख रहा है क्या नीतीश? Okay.
Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. तो क्या समझ में आया इससे आपको? इंटेंशनली वेदास को सप्रेस किया गया. So the strength of our country, Bharat was strength, that was the Vedic education system. Okay, and everyone knew this. Whoever came to India, they all knew. India को सोने की चिड़िया बोलते थे पहले. So much gold, there was golden currency, everything. So these people who invaded, the Chinese who came, the Mughals, the Britishers, they all saw that India का strength Vedas है. So if unless you destroy the Vedas, you cannot conquer India completely. When the Mughals came, what they did? So many universities, Nalanda University and all those things they have destroyed. I heard somewhere that I forgot the name of the Mughal king. उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी में आग लगाया था. There were so many books that it was burning for 1 month. Can you imagine? 1 महीने तक the fire was there. अभी हम लोग अगर किसी भी लाइब्रेरी को जला भी देंगे तो लाइब्रेरी it cannot burn for 1 month, right? But इतना टेक्स्ट को जला दिया just to destroy the root of India. ये सब करने के बाद भी still people had the faith. They were not disturbed. When the Britishers came, they told the Queen the same thing. If you want to conquer India, you have to remove their faith from Vedas and put the faith in Western education. The same thing. Only then you can break India, divide and rule. So उन्होंने क्या किया? जानबूझ के संस्कृत सीखा and then translated the Vedas into some wrong thing. जैसे कि भगवान का विग्रह है. Okay, so कुछ दिनों पहले एक न्यूटन में इस्कॉन मंदिर में एक प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं उसे कि भगवान का जो विग्रह है इट इज मतलब मूर्ति को स्थापन किया जाता है. सो इन दैट एक्चुअली भगवान आते हैं. प्राण प्रतिष्ठा मींस वी कॉल द गॉड इनटू दैट मूर्ति एंड व्हेन दैट कम्स राइट यू कैन फील दैट ग्लैमर द वाइब्रेशन स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ओवर देयर. और हाउ दे ट्रांसलेट दिस थिंग कि मूर्ति मींस व्हाट is nothing but a stone idol made of stone or wood or something else like that. So they have translated the Vedas into wrong thing, and in this way, and at the same time, they started giving some material things to the people. Now people are getting bodily conception of life में थोड़ा चमक धमक दिखाएंगे, थोड़ा उनको क्या बोलते हैं नया चीज देंगे जो कभी देखे नहीं. They get attracted to that. So by doing this thing and also giving the material education and removing the faith in the Vedas, our the main scholars, they got completely diverted. And वो लोग को लग रहा है कि हमारा Vedas is nothing but blind faith. समझ रहे? And all those things are written in a letter. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ मैं सुन पा रहा हूँ. हाँ प्रभु, अभी भी तो
कॉन्वेंट स्कूल्स में मतलब ऐसे ही करता है कि माइंड वॉश करता है कॉन्वेंट स्कूल्स में अभी भी। Yeah, that is there in some cases. It is there. मतलब So you know what? These all things, right? It is written a letter to the Queen of England, and it is in the British Museum. जो मैं आपको बोला, I will someday show you the photo of that. Okay, the person who came here, the Indologist who came here, they wrote this thing to the Queen that if you want to break India, you destroy their Vedas. The faith Vedic Vedas से निकाल दो, you can conquer India, and that is what they did. That is what you are following Western education now. समझ रहे? बट हमारे वेदों में ये सब पहले ही दिया गया था। देखिए श्रीमद् भागवतम में इंडिकेट किया था कि गौतम बुद्ध कब आएंगे। 536 BC श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो तीसरा चैप्टर श्लोक नंबर 24 में आप गौतम बुद्ध कब आएंगे सब उनके बारे में दिया गया है। कहाँ पर जन्म हुआ, कब आएंगे। 370 BC में चाणक्य आएंगे। श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में बात दिया गया है। उसके बाद एम्परर अशोका कब आएगा, श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में। अब बस ये सर्च करो SB 12.1.12, if you search on Google you will get that shloka and you can read out. जैसे जो नंबर लिखा है ना SB 12.1.11, SB 1.3.24, as it is सर्च करोगे आपको श्लोक मिल जाएगा गूगल में वेदा बेस से। जीसस कब आएंगे, अथर्ववेद में दिया गया, अथर्ववेद 20.127, जीसस क्राइस्ट 0 BC। देन 570 AD प्रॉफिट मोहम्मद, भविष्य पुराण में बात दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद कब आएंगे। 1486 AD चैतन्य महाप्रभु, महाभारत में इसका वर्णन है। महाभारत के 127.75 नंबर श्लोक में इसका वर्णन है कि कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, वो कहाँ पर जन्म लेंगे। सो ऑल दोस थिंग्स ऑलरेडी गिवन इन द वेदास, ओके, बट वी आर नॉट बिलीविंग द वेदास। तो वेदास हैव ऑल द ट्रूथ। देखिए वेदास में मिलियंस ऑफ इयर्स अगो इटसेल्फ दे हैव टोल्ड प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट हैव अ सोल, बट द कॉन्शियसनेस इज वेरी लेस। उनका चेतना इतना कम है, इवन इफ यू remove the leaf or you cut, it will not be getting that much affected, but it has soul, it has life. जब ये वेदा में लिखा गया था nobody believed it, but when आचार्य जगदीश चंद्र बोस इन्होंने किया, रिसर्च किया, then the whole world has to believe that plant has life. Similarly embryology, भागवतम के 3rd chapter में डिटेल में दिया गया है what will happen the first night when man and woman unite. After that, from 9 months, what happens in the womb of a mother, how the baby grows, and everything detail में दिया गया है पूरा, step by step, month by month, everything वो दिया गया है, but people don't believe it. And उन्होंने बहुत रिसर्च करके कुछ सोनोग्राफी ये सब इंस्ट्रूमेंट्स करके then they are just checking the stomach and telling out the same thing. समझ रहे? देखिए cow dung and cow products जब बोलेंगे तो वो लोग मानते नहीं थे। अभी अब पूरा दुनिया इंडिया के पास ही आ रहा है cow dung cow products के लिए। आयुर्वेद, all those things, see, जितना भी चीज है, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक आर्ट, so many things are there. So if we accept axioms in science, then why can't we accept Vedic axioms? जैसे कि देखिए definition of imaginary unit I equal to -1 root square root, आपने पढ़ा है हम लोगों ने, राइट? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन ये वाला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, the entropy of a pure perfectly crystalline compound at T equal to 0 Kelvin is 0. बट उसके नीचे क्या है, 0 के नीचे क्या है, we don't know. तो 0 केल्विन को एक स्टेबल बना दिया। इमेजिनरी नंबर i का वैल्यू क्या है पता नहीं, तो उसको एक ये कर दिया, इज इमेजिनरी नंबर। तो इसके बेसिस पे हमारा पूरा मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड हमारा जो डेवलपमेंट है रॉकेट साइंस, इसके ऊपर ही डिपेंड है। सो व्हेन वी कैन बिलीव दिस थिंग, देन व्हाई कांट वी बिलीव द एक्सियम्स ऑफ वेदास? यस और नो? बिलीव कर सकते हैं वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। वो क्या अगर मान भी लिया कि ठीक है हम क्यों बिलीव करें, अभी यकीन नहीं हो रहा हमें, तो सिंपल चीज देखिए कि व्हेन यू गो टू, अभी आपने नीतालिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका समझिए एडमिशन हुआ है बाय काउंसलिंग, सो व्हाट यू वुड फर्स्ट चेक दैट वेदर दिस कॉलेज इज ऑथराइज्ड और नॉट। वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर आता है, इसका रैंक क्या है, इसका टीचिंग स्टाफ कैसा है। फिर जब आप कॉलेज में आएंगे देन यू नो दैट कॉलेज इज ऑथराइज्ड, देन जो बुक्स टीचर देंगे यू विल रीड फ्रॉम दैट बुक ओनली, नो। अगर टीचर बोले कि
फैराडे का जो लॉ है वो पढ़ के आओ, कोई ऐसे बोलेगा मैं फैराडे बिलीव नहीं करता, मैं खुद रिसर्च करके रिसर्च करूंगा और इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया है, विल यू से लाइक दैट? नो, because you know it is an authorized thing, so I am doing that. Similarly, Vedas have also authorized. So there are 4 संप्रदाय, okay, 4 संप्रदाय हैं, मतलब द परंपरा जिसमें वेद आते हैं. देखिए, श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी माता के क्या बोलते हैं लिनिएज परंपरा में है. देन ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म जी के लिनिएज में. देन रुद्र संप्रदाय, शिव जी के परंपरा जो है लिनिएज. एंड देन देयर इज कुमार संप्रदाय. ओके, और हर एक संप्रदाय के एक एक आचार्य है. श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी, एंड कुमार संप्रदाय के आचार्य है निम्बार्क आचार्य. तो ये like how we have our institutions college like that, these are the authorized क्या बोलते हैं institutions you can say, और परंपरा you can say. So अगर कोई भी आपको अगर बाहर बोलेगा कि नहीं लोग तो गॉसिप करते रहते, राइट, मैंने सुना था कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हो सकता है, मैंने सुना था यहाँ पर, तो किससे, you have to cross question, किससे सुना था आपने, क्या वो परंपरा में आता है कि नहीं. अगर आप जाके किसी क्या बोलते हैं any person in the train traveling with you who is not from engineering background and he's saying something about engineering which is wrong, will cross question, right? आपने कौन से पढ़ाई किया था बताओ, how can you say this thing, right? Similarly, but when it comes to spirituality, we don't think that. हम लोग गप्पे मारते हैं, मैंने भी सुना था, ये हो गया वो हो गया, हम लोग अपना theory बनाते जाते हैं. Yes or no? So this is the main thing, how you can find out what is truth and what is not the truth, who is cheating and who is not cheating. From this you can find out. So our teachings come from ब्रह्म माधव संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी का लीनिएज है. यहाँ पर दिखाया गया है कि ब्रह्मा जी ने नॉलेज दिया उनके बेटे नारद मुनि को. नारद मुनि से फिर लाइन से ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर, प्रभुपाद. In that way, this knowledge has come to us. Okay, so our sampradaya is this one. So in this way, if somebody, anytime they ask us, then you can easily say them this thing, okay. And even शास्त्रों में लिखा गया कि Sanskrit is the language which has the vowels and consonants of all languages of the world, and it can become the master computer language, which can even be more better than C language, if अगर इसको implement किया जाएगा तो. रिसर्च साइंटिस्ट ने रिसर्च किया इसके ऊपर, संस्कृत के ऊपर. This is the advantage of Sanskrit language. It can become a computer language as well. तो जितना भी languages है पूरे दुनिया में, everything has originated from Sanskrit language. समझ रहे? तभी और जो एक कोई तो पिलर है, I forgot the name, in India only. तो हाँ, एक पिलर है जिसको अभी तक जंग लगा नहीं है. हाँ, from they have used so nice metals and alloys in that. Till now, I forgot the name. I'll tell you. I just heard it. हाँ, कुतुब मीनार के पास में. कुतुब मीनार के पास क्या? Okay. So अभी तक जंग लगा नहीं है. And when Hitler and all those people were there, when World War I and II were going on, even they referred the Vedas to find out the metal alloys from the Vedas so that they can use it in their wars to make their aircraft and even submarines. During World War, they have referred our Vedas. See, so people all over the world knew that Indian Vedas ka strength kya hai, but we ourselves, we don't know that thing. That's why we are still a developing country, not becoming a developed country because of this main thing. So, व्यास देव ने लिखा है. पहले how it was means, पहले के युगों में, right, वेदा लिखा गया नहीं था. It knowledge was there because people's intelligence and grasping power was so sharp. If I say you one shloka, you will remember it throughout your life. You will not forget it. But when Kali was about to start, Vyasdev understood this is the most degraded age, and hypocrisy, forgetfulness, anger, greed will be the main characteristics, like this many other characteristics of this age. People can't remember these things. So he all Vedas को उन्होंने शास्त्रों के इसमें उन्होंने रचना किया. They penned down all the Vedas and then he have given the Vedas so that we can. कलियुग का कितना हो गया होगा ये अभी तक?
Kalyug is around 4,70,000 or 60,000 years. पूरा एज है उसका ना टोटल This is अभी कितना बीत चुका so now Kalyug started from the day when Lord Krishna left his leg from this planet and he went back to his dham. So now it was 5,000 years back. So 5,000 and something is currently which going on. Okay, but there is so much more, and जितना आगे कलयुग जाएगा, that much suffering will, that much more suffering will increase. Okay, so India has the wisdom or Vedic wisdom, and West has the technology. So if we combine the technology of West and Indian wisdom, then human life can be very happy and peaceful. समझ रहे? That is what Prabhupada did. He had the wisdom. He went to America, used the technology. Dictaphone को use किया. You can see the videos and photos and all those things of 1960s, 70s. He used technology and recorded original recordings of Prabhupada till now. And you can see in ISKCON, people all over the world are there. American, European, Muslim, Russians, Australian, all happily eating, dancing, doing their work, everything. Yes or no? How is it possible? प्रभु जी ये सब हुआ लेकिन मुस्लिम सब तो अलग ही है हम लोग It is there. It requires प्रचार की जरूरत है उसके लिए. Even there is a temple in Pakistan, you know that, ISKCON temple. And the Muslim people who really understand that we are not the body, we are spirit soul, they come there and they pray to Lord Krishna. They read Bhagavad Gita. They read namaz also. They read namaz. They're not living namaz. They're reading that also. At the same time, they're reading Bhagavad Gita also, because they understood that we are not the body, we are spirit soul. And they feel that happiness, वो रस मिल रहा है, happiness मिल रहा है उनको, समझ रहे? Because you have combined the Vedic wisdom, the technology of the West, and now life will be very happy. Just I will end this thing with a small example. I think I've told you this thing before also, not sure to you or someone else. एक लड़की को पिंपल्स हुआ था, बहुत सारा बॉइल्स आ रहे थे चेहरे पे, लेग पे, ऑल दोस थिंग्स. सो ही वेंट टू एन सैंट्रो, कौन से एमबीबीएस को क्या बोलते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास गए. तो उन्होंने कुछ मलम दिया, डर्मेटोलॉजिस्ट ने मलम दिया, मलम लगाया, पिंपल्स वो सब चला गया था, बॉइल्स वेंट ऑफ. देन नेक्स्ट मंथ इट केम ऑन द लेग. तो फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला सेम मलम लगा दो, चला जाएगा, चिंता नहीं है. लेग पे चला गया. फिर कमर पे आके रात में सो नहीं पा रहा, नींद खराब हो गया उसका. ऐसे 3-4 ट्यूब खलास कर दिए पिंपल का, क्रीम लगा के, पिंपल जा नहीं रहा है. देन ही गॉट फेड अप विद एलोपैथी डॉक्टर एंड ही वेंट टू आयुर्वेद. ओके, आयुर्वेद को बोला कि बार बार ऐसा हो रहा है. सो उन्होंने उसको नाड़ी परीक्षण बोलते हैं उसे, कि दे जस्ट टच योर वेन्स एंड दे टेल एवरीथिंग. आयुर्वेद का टिल नाउ इट इज देयर. आई आल्सो गो, आई जनरली गो आयुर्वेद डॉक्टर ओनली. इतना वेरीफाइड डॉक्टर सब है. Yes, आयुर्वेद का भी है. आई गो आयुर्वेद डॉक्टर ओनली जनरली, डोंट गो टू एलोपैथी. सो वो करके सब कुछ बोल देते कि आपका क्या चल रहा है, एवरीथिंग दे टेल. तो उन्होंने बोला कि रीजन फॉर दिस पिंपल मलम से, यस द रीजन हां प्रभु डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इशू आ रहा था. ओके, द रीजन फॉर द पिंपल से मलम से जाएगा नहीं. द रीजन इज दैट because of eating junk food and all, your blood has become impure. Yeah, so कुछ powder, कुछ जड़ी बूटियाँ दी powder format में, you eat this for 1 month and it will go. And you eat for 1 month and the pimples and all, because blood became pure. So they went to the root cause. समझ रहे? Yeah, so उसका root cause था blood impure था, इसलिए it was manifesting on his skin, coming out as impurity on his skin. समझ गए? If I take the same example and if I compare with our current situation of our country, then you can see that previous कुछ time पहले Hyderabad rape case हुआ था. Then you saw in Bangladesh temples were broken maybe last year, yes or no. Then again some riots going on in Delhi. Now something happening, people are burning the trains and all those things. And again जहाँ पर चीज हुआ, क्या हुआ, पुलिस मिलिट्री फोर्स आके उसको दबा दिया. मतलब पिंपल आया है, इम्प्योरिटी, वो दबा दिया है, समझ रहे ना. हिंदू मुस्लिम फाइट दबा दिया, ऑल दोस थिंग्स. सो दिस इज व्हाट साइंस इज गिविंग अस. इट इज अ स्टॉप और a stop gap solution or a patch up solution. कुछ हुआ उसको patch up करो, but that is not the real solution. Real thing is that if everybody understand that we are not the body, we are spirit soul, this basic अगर समझ जाएंगे, there will be no fight between Hindu and Muslim. क्योंकि आपका भी सेम शरीर है, मेरा भी सेम शरीर है. We are all soul only.
yes or no? बस कलर अलग है, रिलीजन अलग है, बट वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी. जब हिंदू मुस्लिम का जब पार्टीशन हुआ था, so many bodies were dead. इधर हिंदू मुस्लिम सब कुछ थे, but did identify कि हिंदू बॉडी को अलग करो, मुस्लिम को नो. It took everyone and burned them at a stretch. तो आइडेंटिफाई नहीं किया, इतना सारा बॉडीज था, कैन आइडेंटिफाई, स्मेलिंग एंड रॉटिंग ऑल द बॉडीज. जब वॉर का ये पार्टीशन जो हुआ था, राइट, सारा डेड बॉडीज वहां पर था, सबको एक साथ लेके इकट्ठा करके जला दिया गया. सो दे कांट डू दैट इज हिंदू बॉडी, मुस्लिम बॉडी. दिस थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. अगर ये हम समझ पाएंगे, then only the problems of life can be solved, and that is how it comes from Vedas. Only Vedas can teach us this thing. समझ रहे? But this is unfortunately हमारे education system में ये Vedas का knowledge नहीं है. That's why we are becoming Sundar Pichai and Satya Nadella and all those things. Indians are becoming this thing, but India is not growing anywhere. समझ रहे? वो लोग भी तो नहीं जानते होंगे. Yeah, if that is why these centers are there near the colleges. Maybe in future you can become a world leader. Maybe you become a CEO of a company. There are like thousands of people under you, and you just tell one statement that I read Bhagavad Gita and it gives me peace and happiness. The employees will automatically start reading because they believe in you. If Sundar Pichai says that I read Bhagavad Gita every day, Google ka CEO, the whole world will start reading Bhagavad Gita. If Sundar Pichai is reading Bhagavad Gita. From 2002 to 2022, 20 साल में from college life to the CEO of Alphabet, the company गूगल जिसके अंडर है, वो कंपनी का सीईओ बन गया अभी सुंदर पिचाई. समझ रहे? So this is the purpose of this voice education that we are giving you, that you become successful in your life, but at the same time you take our culture and you become happy, the whole world will become happy. Okay, so this is the another session. So next session is Science of Soul. So I think we're already late over here. So I will take it the next time. Okay. If you go home, then you can attend online. Is it possible? ठीक है ना? This is more interesting. Science of Soul with some real-time examples. क्या क्या होता है? I will tell you in detail. This thing. ठीक है. So I end over here now. Any doubts or any questions you have? You can ask. Science of Soul. I will check with Madam Prabhu and I will tell you. Okay. I'll call and tell you. प्रभु कल सैटरडे को क्लास होगा? या टुमारो का कल का क्लास सेम वो हम लोग जहाँ पर स्टॉप किए थे, राइट, लास्ट टाइम, कि वी हैव टेकन द रथ को खींच के वृंदावन लेके जा रहे हैं. ठीक है ना? उसके बाद का नाउ प्रभु विल से फ्रॉम व्हाट विल हैपन. वो 8 बराबर आ जाता है. करेक्ट. वो तो हम उससे आगे चले गए, फिर मिलते हैं सब लोग मिलते हैं. द्वारका के जो डिवोटीज है और वृंदावन सब कुरुक्षेत्र में मिलते, कुरुक्षेत्र से उसको खींच के रथ वृंदावन ले जाते हैं. ओके, ना उसके आगे का हम लोग एपिसोड सुनेंगे अभी. ठीक है, क्या होने वाला है कर. इसमें बहुत कुछ देयर इज समथिंग हम लोग जो पिक्चर में देखते हैं, टाइम इंटरस्टेलर, अलग अलग मूवीज में देयर इज अ टाइम चेंज, दिस एंड दैट, ऑल द थिंग्स विल कम हियर. दे ऑल आर फ्रॉम वेदास ओनली. वेद से अलग अलग चीज निकाल के पिक्चर बना के एक लोग पैसा कमा रहे. देखिए, समझ रहे? कितने साल पहले वेद में दिया गया था. द टाइम ऑफ अर्थ एंड टाइम ऑफ अदर प्लैनेट्स आर डिफरेंट. इफ यू गो देयर योर एजिंग विल बी लेस. इफ यू आर हियर एजिंग विल बी फास्ट. अगर आप सन के और नजदीक जाएंगे एजिंग विल बी मोर फास्ट. गो टू प्लूटो एजिंग विल बी मोर लेस. एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर लाइक वेदास में मैथ का ये सब पूरा सब कुछ दिया होगा. राइट एंगल ये मतलब पूरा ये सब तो बेसिक हो गया. Even the distance of Earth and Sun is given. Distance of Earth and Moon is given in Vedas. Long time. प्रभु हनुमान चालीसा में भी तो दिया हुआ है ना, अर्थ से सन का डिस्टेंस. अर्थ सन का डिस्टेंस दिया हुआ वेदास में, राइट, करेक्ट. हाँ प्रभु, हनुमान चालीसा में भी दिया हुआ है ना, युग सहस्त्र जो दिन फल. हनुमान चालीसा जो है उसमें भी तो दिया हुआ है ना. हनुमान चालीसा, करेक्ट, उसमें भी दिया गया. So Vedas have everything. So this was the solution today. I just summary में मैं आपको बोल देता हूँ एक बार, so that the main points to understand. तो पहले हम लोगों ने ह्यूमन और एनिमल का डिफरेंस किया. उसमें 4 चीज क्या कॉमन था? ईटिंग, डिफेंडिंग. ये 4 चीज उसमें कॉमन था. फिर ये 4 चीज कॉमन था. अभी तो ह्यूमन और एनिमल में मेन डिफरेंस क्या है? How can he differentiate? And he can inquire.
Inquire. Why am I suffering? What is the goal of life? Purpose of life. You know, that God. correct. So that is what human being can inquire. So there is a difference. Now, अभी समझ गए कि आप human being हैं. But then we have problems in our life. तो problems categorize किया गया था 4 main problems जो आप उसको ना नहीं कर सकते. You have to compulsory suffer those things. What are those? Birth, old age, disease, And death. Birth, old age, disease and death. ठीक है आदित्य. 4 main problems. Then after that we have 3-fold sufferings. Problems हो गए and sufferings. Sufferings क्या क्या थे? आदि देवी क्लेश. Due to our nature and everything is Adi Devi, from the nature and from what you say, earthquake, tsunami, all those things. Adi Bhautik and Adi Atmik, means from our own body and mind and from others. ठीक है, ये 3 suffering हो गया. This was the 3rd point we discussed. 4th point is that all the sufferings are there, but science is giving patch-up solution. Weak pen लो बूढ़े हो गए तो ये लोशन लगा लो, wrinkles आते हैं तो hair dye कर लो. All those things is giving. That is not the real solution, right? It's temporary patch-up solution. Vedas were giving the real solution. That is what we discussed. Okay, what is the real solution of the problem of life? And then after that, we discussed कि वेदा को authenticity क्या है. Just like हमारा college का example के मैं compare किया था, same way authenticity of Veda. So next time someone tells you कि मैं यहाँ पर सुना था कि ये हुआ था, वो हुआ था. So you should use your intelligence at that time. This point should come in your mind. क्या संप्रदाय में आते हैं क्या? भी संप्रदाय थे कम. शिव जी के संप्रदाय में आते हैं कि ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं, लक्ष्मी जी के संप्रदाय में आते हैं, कुमार के संप्रदाय में आते हैं. These are the 4 main संप्रदाय. इसमें अगर आते हैं तभी आप बिलीव करिएगा. ठीक है, तो लोग बहुत कुछ बोल के आपको उल्लू बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे. ठीक है. And then we came to know by the probably ये समझ मतलब लक्ष्मी जी और महादेव जी और ये संप्रदाय ये क्या होता है? संप्रदाय मीन्स 12 महाजन है. ओके, एक श्लोक है, आई फॉरगॉट द श्लोक. उसमें ब्रह्म जी है, ब्रह्म, देन प्रहलाद महाराज, यमराज, शिव जी, लक्ष्मी जी, कुमार संप्रदाय है, और भी ऐसे 4 more people are there. बलि महाराज है. तो ऐसे 12 devotees है. These are devotees very dear to Lord Krishna, and Lord Krishna has given them the authority. Okay, that you teach the knowledge further. So they taught the knowledge to their generation, their disciples, their generation. शिव जी ने अपने disciples को knowledge दिया, भगवान का knowledge. शिव जी is doing जप करते हैं, right? भगवान का जप करते हैं. Then he is the very dear devotee to Lord Krishna. Okay, there is very less difference between Krishna and Shiva. I will tell you in future this thing. It will become very interesting topic है. And Lakshmi जी भगवान का सेवा करती है always. And then Brahmadev, भगवान ने उन्होंने he came from the navel of Lord Vishnu. नाभि से आया है ब्रह्मदेव. And Kumar, they are the sons of Brahma, 4 कुमार. And then उनको भी अथॉरिटी दिया भगवान ने, विष्णु भगवान ने, कि आप ये नॉलेज स्प्रेड करो. सो अब ये 12 संप्रदाय में से कलयुग में दिस 4 आर मेन प्रोमिनेंट. दिस 4 आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन कलयुग. ओके, सो लाइक इट इज लाइक समझिए कि नॉलेज, जैसे कि मैंने एक लेटर लिख के दिया है कि ओके, नाउ आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड, सो आई गिव यू द अथॉरिटी कि नाउ आफ्टर मी यू विल बी टेकिंग द चार्ज एंड यू विल बी टीचिंग टू योर डिसाइपल्स, लाइक दैट. ऐसा लेटर ब्रह्मा जी नारद को लिख के दिया. जस्ट फॉर एग्जांपल, नारद ने उनके डिसाइपल को ऐसे लिख के वो प्रभुपाद तक आया है. एंड देन प्रभुपाद देन पेंड इट डाउन एज इट इज इन भगवत गीता एंड अदर ट्रांसलेट, इंग्लिश ट्रांसलेट किया संस्कृत से, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऑल दिस विषय उपनिषद, ऑल दिस थिंग, एंड इट केम टू अस लाइक दैट. तो द संप्रदाय इट हैज कम टू अस. देयर आर मेनी अदर थिंग्स which people will tell you and you will get confused. That's why this knowledge is given, that you should cross question and ask ये कहाँ से आया है. So these are like authentic colleges, you can say. It's not a bogus university. रहता है ना, कुछ पैसा लेके आपसे एडमिशन ले लिया पर कुछ है नहीं, वैसे भी तो लोग रहते हैं. Same thing here also, people are there like that. That's why these 4 things are being told. ठीक है. Any other question? Aditya, any questions? Ashish? हाँ प्रभु,
बोल रहे थे कि वो मतलब जो प्रभु वो चार्ट मतलब बताया था ना कि आदि मतलब दैविक और आदि क्या था आदमी आत्मिक। तो वो जो डेथ है वो कौन सा वाले में आएगा? मतलब मान लीजिए डेथ सपोज सुनामी से हो गया तो वो आध्यात्मिक में आएगा कि आदि दैविक में आएगा? कश्मीर आई विल जस्ट शो यू दैट स्लाइड अगेन। इसमें आप लोग कंफ्यूजन है राइट, इसमें नाम थोड़ा सा ये है करके राइट। इसके लिए नोट्स बना लेंगे तो आपको इजी होगा। बहुत मेहनत करके स्लाइड बनाया है। एक मिनट ना, आई जस्ट गो टू दैट स्लाइड। या ले रहे ये क्या हाँ हाँ वो हाँ तो हाँ वो और एक स्लाइड ऊपर जाइए। या जस्ट 1 मिनट, वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। ठीक प्रेजेंट कर देते हैं, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।